arthropoda. Phylum. Let's discuss a question. Which one of the following groups? Which one of the following groups? Class of arthropoda is artificial. Is artificial. हमने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जो मायरियोपोड्स हैं, मायरियोपोडा, these resemble a lot with insects. They have great resemblance with the insects, right? Internally, they have got malpighian tubules, they have got open circulation, they have got system of spiracles, right? There are basically two things on the basis of which they are different. One is the number of segments, like differences with insecta. अगर हम इस ग्रुप में ऐसे डिस्कस करें तो there is one difference, that is types of segmentation, or you can say number of segments, because in gylopods there is a trunk, number of segments or segmentation or segmentation. ये हम different क्यों लिख रहे हैं? Because the gylopoda or the gylopods have head and trunk. Head and trunk. ये तो कल का रिवीजन ही हो गया एक तरह से. Right. Second difference is number of feet or number of legs. If you want to add, you can add another difference, and that is insects have wings. These do not. Insects have wings. Two pairs of wings are there. Right. अब ये जो differences हैं, ये सिर्फ external differences हैं. External features में differences हैं. Internally, these organisms resemble a lot with the insect, and hence this class or this group is considered as the artificial group. Okay? इस तरह की कुछ चीजें हमने पहले भी डिस्कस की है. Protista is a synthetic kingdom. Right? So, now today we will start with another topic, and that is metamorphosis. This metamorphosis in arthropods. Development of secondary morphological changes. इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम? Development of secondary morphological changes. In life stages.
in various stages of life cycle, or simply the conversion of larva into the adult. In very simple terms, the conversion of larva into the adult. This phenomena is known as metamorphosis. The adult is scientifically known as imago. The adult is known as the imago. Right? Now next page. We'll move on to the next page. 7 minutes. Okay. एक तो हमने क्या पढ़ा? Artificial class of arthropoda. Which one is the artificial class? Myriapoda. Myriapoda is the artificial class of arthropoda. Why is it so? Because there are lots and lots of internal resemblances between the myriapods and the insects. There are certain differences. Tylopods have trunk. Tylopods. Number of legs are different. In the case of myriapods and insects, and then the insects have wings. अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, मेटामॉर्फोसिस. मेटा का मतलब हुआ सेकेंडरी, morphosis, development of morphology. So it's basically secondary morphological changes in the life stages. Development of secondary morphological changes in the life stages, as the word suggests. Conversion of larva into the adult. Conversion of larva into the adult. The adult is known as imago. Next page open कर लें? Yes, sir. Okay, thank you. Now, types. Types of metamorphosis. Types of metamorphosis. इसमें it's not a type basically. If metamorphosis is absent, comparison के लिए एक term use कर लेते हैं हम. Ametabolous. Ametabolous. It's previously asked question. Ametabolous. No metamorphosis. No metamorphosis. Metamorphosis is absent. The best example जो अब तक आंसर भी है नीट ऑल इंडिया पीएमटी इनसे क्वेश्चंस में, it is lepisma. Lepisma is commonly known as silverfish. It is commonly known as silverfish. Silverfish. हमने कल भी आपको बताया था, there are certain fishes which are not known as, which are not true fishes. This is one of the example. Silverfish, lepisma. अगर आपकी बुक्स कहीं काफी टाइम से पड़ी हुई है, the books are stacked at some place, and after some time, like few months, if you remove the books, there is a tiny insect, a very fast running tiny insect. ये इस तरह का ऐसा कुछ बड़ी तेजी से यूं दौड़ता हुआ
किताबों के उससे निकलता होता है. And if you touch it, the upper surface releases a silvery powder. Upper surface एक silvery powder सा release होता है. This animal is known as lepisma or the silver fish. It's not a true fish. It's not a fish. ठीक है. इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता. अच्छा. Porometabulus. Porometabulus. Now this parametabulus, porometabulus, means a slow or gradual metamorphosis. Gradual. अब इसका मतलब क्या हुआ? काफी सारे इंटरमीडिएट स्टेजेस बनती है. ये मेटामॉर्फोसिस एक दो स्टेजेस में खत्म नहीं होता. एज इन कॉकरोच, फ्रॉम द एग nymph arises. The nymph undergoes many stages, many nymphal stages. In fact, cockroach में तो इतना छोटा होता है कि final nymphal stages they begin to reproduce. It's very shocking. Most of the adult cockroaches, they are sterile, they cannot reproduce. Many nymphal stages, and then finally the adult is produced. अभी जैसे एग्जांपल बताया, कॉकरोच molds or it shows metamorphosis, molds 13 times. The 14th stage is the adult. Now you can see it's very slow. धीरे 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 एक स्टेज से दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज बनती जाती है. The other animals, grasshopper, termites, दीमक, the white ants. अच्छा जी. अभी nymph क्या चीज है? इस वर्ड ये भी पूछ लिया जाता है आपसे. What is a nymph? Nymph is a juvenile form, a young form. Nymph is a juvenile or young form resembling adult in morphology. Adult in morphology. Adult जैसे ही दिखता है, छोटा कॉकरोच बड़ा कॉकरोच, बस इतना. This kind of metamorphosis is known as porometabulous metamorphosis. Very gradual or slow. Cockroach molts 13 times. 13 times molting occurs. याद रखना. It's given in the NCERT as well. One more thing. Molting is also known as, or scientifically known as, ecdysis. ECDYSIS. अब अगर ये वर्ड दिया हो जरा दुखी परेशान मत होना, पता नहीं ecdysis क्या है. Ecdysis क्या होता है? It's just molting one larval form to another larval form. That's it. On one nymph to another nymph. Then partial. Next page. Partial, incomplete. Partial or incomplete.
अच्छा, इसको समझने के लिए अपने को पहले कंप्लीट पता होना चाहिए, पार्शियल और इनकम्प्लीट। इसके लिए टर्म यूज की जाती है हेमी, हेमी मेटाबॉलिस। तो कंप्लीट क्या है? कंप्लीट क्या है? कंप्लीट के लिए टर्म यूज की जाती है होलो मेटाबॉलिस। होलो मेटाबॉलिस इज कंप्लीट, इज कंप्लीट। अच्छा जी, एग, लार्वा, प्यूपा एंड द एडल्ट और द इमेगो, adult or imago is formed. 1, 2, 3, and 4. This kind of life cycle or metamorphosis is known as complete. Hemi, some stages absent. Some stages absent. Now, in this case, what happens? From the egg, from the egg, naiads, naiads develop. And the naiads develop into the adults. It is not gradual like orometabolism. It is relatively faster. The intermediate life stages are known as naiads. The gap between, यहाँ पे एक टर्म और पढ़ लेते हैं, the gap between two life stages, the gap between the two life stages is called stadium. Stadium is actually a time period where some major event is occurring. Stadium is a time period. या इसमें कुछ बीच में चेंज नजर आएगा आपको, जैसे एग्स में कुछ चेंज हो रहा होगा, एग के अंदर something which is hidden, and then what happens? A larva appears, and then there are certain changes which are happening in the larva, and then the pupa develops. This time period is known as the stadium. इसे हम क्या बोलते हैं? स्टेडियम. अब इनके एग्जांपल्स. Done? Done, sir. Example. Example is dragonfly. अब इसमें एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ड्रैगन फ्लाई की लाइफ स्टेजेस, इमेच्योर जुवेनाइल लाइफ स्टेजेस को क्या कहते हैं? naiads. The immature stages of the dragonfly are known as the naiads. Right? Most of the insects show holometabolism. Mosquitoes. Mosquito. Butterfly. Butterflies. Moths. Honeybee. Etc. Most of the insects they show holometabolism. This is most common type. Most common. Most common type of metamorphosis.
पोरोमेटाबोलस, हेमीमेटाबोलस एंड होलोमेटाबोलस। पोरो बहुत धीरे 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 चेंजेस आ रहे हैं, टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। हेमीमेटाबोलस तो बीच में स्टेज ही एब्सेंट है। लार्वा प्यूपा ऐसे आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, और जब लार्वा और प्यूपा डिफरेंशिएट कर पाते हो तो उसमें क्या कह देते हैं, कंप्लीट और होलोमेटाबोलस। दो लाइफ स्टेजेस के बीच का गैप स्टेडियम। सर जी सर नाइट्स से कहते हैं तो नाइट्स। स्पेलिंग बोलो। सर ड्रैगन फ्लाई की सेकंड स्टेज को। अच्छा नायड्स, नायड्स ये जुवेनाइल इमेच्योर स्टेजेस है, इमेच्योर स्टेजेस। जो निम्फ होता है, निम्फ में रिप्रोड्यूस, इससे जस्ट पहले जो अभी हमने किया था पोरोमेटाबोलस, इसमें क्या बनता है, निम्फ बनता है। आप ये चीज कह सकते हो, निम्फ माइट स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, नायड्स नेवर। द निम्फ्स may start reproducing. नायड्स नंबर में भी कम बनते हैं। अब यहाँ पे ये 13 टाइम्स मोल्ट करता है कॉकरोच। 13 टाइम्स मोल्टिंग में 12 निम्फल स्टेजेस है, 12 नायड्स स्टेजेस में नंबर में भी कम होते हैं, एंड नायड्स नेवर रिप्रोड्यूस। नायड्स जो है these are immature stages, do not reproduce. यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट regulation of metamorphosis, regulation of metamorphosis. There was a brief period of time when no question was asked from this. अभी रिसेंटली इस पे क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं फिर दोबारा से। See the insects, insects have it developed, well developed तो नहीं कह सकते, but it developed system of hormones or system of endocrine glands. Endocrine glands. The hormones regulate metamorphosis. The hormones regulate metamorphosis. The brain releases a hormone. The brain releases a hormone which is known as brain hormone. Simple. ब्रेन से एक हार्मोन निकलता है, उसे हम नाम क्या देते हैं, ब्रेन हार्मोन। ठीक है, अच्छा जी। अभी जो ब्रेन हार्मोन है ये एक ग्लैंड को एक्टिवेट करता होता है। इट एक्टिवेट्स कॉर्पोरा कार्डिका, कॉर्पोरा कार्डिका। इट्स अ बॉडी which is close to the heart. वैसे भी इसके हार्ट में 13 चैम्बर्स होते हैं, राइट।
Now this corpora cardiaca produces a hormone to stimulate another gland which is known as the prothoracic gland. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, prothoracic gland. राइट, यहाँ पे फैक्टर लिख लीजिए. This is a factor to stimulate this prothoracic gland, and as a result it produces a prothoracic hormone which is known as ecdysone. It releases and it secretes. This secretes prothoracic hormone or ecdysone. ECY ECDYSONE, ecdysone. अभी नीट का क्वेश्चन क्या था वो भी डिस्कस करेंगे, काफी रिसेंट क्वेश्चन है, ecdysone का क्वेश्चन आ चुका है. Now this ecdysone is the molting hormone. So this ecdysone in turn causes molting or ecdysis. इसकी वजह से ecdysis होता है. ठीक है, तो बेसिकली अब अपने को क्या याद करना है, ये वाला पार्ट अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऊपर वाला भले ही भूल जाओ, ये चीज जरूर याद रखना. ecdysone का सोर्स क्या होता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड. The source of ecdysone is prothoracic gland. Okay. There is another gland which prevents molting. Corpora elata. Corpora elata. It produces a hormone, neotenin. Neotenin. This neotenin is known as the juvenile hormone. The juvenile hormone. It prevents or it inhibits molting. This inhibits. This inhibits this is how metamorphosis is controlled, regulated. Next page. So basically, metamorphosis is the net outcome of two glands. आप इसको ऐसे याद करोगे, एक ग्लैंड है प्रोथोरेसिक ग्लैंड और दूसरा ग्लैंड है कॉर्पोरा एलिटा. Corpora elata produces the juvenile hormone जो immature stages में ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करता है.
which is also known as neotenin. And this prothoracic gland produces, इससे क्या निकलता होता है, ecdysone. बिल्कुल नीचे बीच में लिख लीजिए मेटामॉर्फोसिस. एक का पॉजिटिव इफेक्ट है और दूसरे का नेगेटिव इफेक्ट है. Ecdysone promotes metamorphosis. The juvenile hormone or neotenin, it inhibits metamorphosis. जो हार्मोन ज्यादा हो जाएगा उसका इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा. It's like this. These two hormones, which are acting opposite in direction, such a combination of hormones is known as antagonistic. Antagonistic hormones. ऐसे hormones जो कि opposite in action होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, antagonistic hormones. एक मेटामॉर्फोसिस को प्रिवेंट को स्टिमुलेट कर रहा है and the another is inhibiting the metamorphosis. Antagonistic हो गए ecdysone and juvenile hormone. और इनसे इनको प्रोड्यूस करने वाले जो ग्लैंड्स हैं, the glands which produce these hormones would be antagonistic glands. ठीक है, क्लियर हुआ सबको? अब Yes, sir. अब नीट का क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन बेसिकली ecdysone के एक्शन वगैरह से रिलेटेड नहीं था. क्वेश्चन था which one of the following is a steroidal hormone? Which one of the following is a steroidal hormone? Steroidal hormone. अब ये कैसे पता चलेगा जी? If the suffix, अब ये इसको रूल की तरह याद कर सकते हो आप. If the suffix is ONE, या पीछे क्या लग रहा है? ONE है ना इसमें. If the suffix is on, the hormone is steroidal. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सफिक्स जो है ये स्टेरॉइडल हार्मोन्स के लिए यूज किया जाता है. OL, ओन या ऑल, name of the hormones ending with ONE or OL, such hormones are steroidal.